हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जल्दी क्रैश वेल। मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त फवाद अब्बासी। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 10 मोस्ट एंटीसिपेटेड गेम्स ऑफ 2022 जिनसे रिलेटेड आप बहुत ही ज्यादा एंटीसिपेटेड है। इसी के देखते हुए ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Bayonetta 3 is an upcoming action adventure game which is being developed by Platinum Games. This game is the sequel of Bayonetta 2 and third installment in Bayonetta series. This game follows the story of Bayonetta, who has to fight against the horde of enemies to save the world. And in this fight, her old allies will also help her in the fight against the horde of enemies. Overall, this game will be an action-packed and hack and slash packed gameplay, having new challengeable bosses, new enemies, as well as new challengeable quests. Bayonetta 3 will be released on 28 October 2022 on Nintendo Switch exclusively with special edition named as Trinity Masquerade Edition. Scorn एक अपकमिंग फर्स्ट पर्सन हॉरर सर्वाइवल गेम है जिसको एप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। बेसिकली ये गेम विजुअल आर्टिस्ट एचआर गीगर के वर्क से इंस्पायर्ड है। और मैं अगर इस गेम के गेम प्ले की बात करूं तो इस गेम के गेम प्ले में आपको एक हॉरर एनवायरनमेंट के साथ साथ एक क्रीपीएस्ट गेम प्ले भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस गेम में। इसको ऑन 21 अक्टूबर 2022 को Xbox Series S, X और Microsoft Windows पे एक्सक्लूसिवली रिलीज होगा। A Plague Tale Requiem is an upcoming action adventure and stealth game developed by Asobo Studios, and it is the sequel of A Plague Tale Innocence. A Plague Tale Requiem follows the story of two siblings, Amicia and Hugo, who are looking for the cure of Hugo's blood disease in southern France, as well as also saving themselves from the soldiers of Inquisition and horde of mouses who are spreading the Black Plague. And if I talk about its gameplay, so this game contains the gameplay of stealth, in which they have to save themselves from the soldiers as well as horde of dangerous mouses. A Plague Tale Requiem will be released on 18th October 2022 on PlayStation 5, Xbox Series S, X, Nintendo Switch and Microsoft Windows. Devil in Me Dark Pictures Anthology सीजन 1 की फोर्थ और लास्ट इंस्टॉलमेंट है और इस गेम को सुपर मैसिव गेम्स डेवलप कर रहा है। और अगर मैं इस गेम की स्टोरी के बारे में बात करूं तो इस गेम की स्टोरी कुछ फिल्म मेकर्स के अराउंड घूमती है, जो कि मॉडर्न डे में सीरियल किलर एच.एस. होम्स के डुप्लीकेट पर्सन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं जिसने एक कैसल पे मर्डर किया है। ओवरऑल इस गेम का कैंपेन गेम प्ले वही हॉरर और सस्पेंस लेकर आ रहा है, जो कि आपको हर गेम प्ले में देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार हॉरर और सस्पेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा इस गेम में आपको मल्टीप्लेयर मोड्स भी देखने को मिलेंगे जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। डेविल इन मी फॉल 2022 को PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, X और विंडोज पर स्टैंडर्ड एडिशन, एनिमेट्रॉनिक एडिशन और वॉल्यूम 2 एडिशन के साथ रिलीज होगा। ओवरवॉच 1 का सीक्वल ओवरवॉच 2 एक अपकमिंग मल्टीप्लेयर वीडियो गेम है और इस गेम को एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड डेवलप कर रहा है। और अगर मैं इस गेम के बारे में बात करूं तो इस गेम में आपको वर्सेस मोड्स जैसे कि PvP और PvE मोड्स इसमें देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इस गेम में आपको एसल्ट, एस्कॉर्ट, कंट्रोल और हाइब्रिड जैसे दूसरे मोड्स भी देखने को मिलेंगे। साथ साथ इस गेम में एक मेजर चेंज भी देखने को मिलेगा, जिसमें इस गेम की टीम साइज को 6 से 5 पे रिड्यूस कर दिया गया है और ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम होने वाला है। ओवरवॉच 2 4 अक्टूबर PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, X और Nintendo Switch पर आपको फ्री मिलेगा। The Last of Us Part 1 is a ground-up remake of The Last of Us 2013. It is being developed by Naughty Dog, who has also developed Uncharted series. If I talk about The Last of Us Part 1 game, so this game will contain a story of Ellie and Joel, which you will experience with a dark and beautiful environment, and it will also contain a realistic gameplay like The Last of Us Part 2. And if I talk about the release date, The Last of Us Part 1 is set to be released on September 2, 2022 on PS5 exclusively with Standard Edition, Digital Deluxe Edition and Firefly Edition, as well as its PC version is also in development. Call of Duty Modern Warfare 2 2022 is the
sequel of Call of Duty Modern Warfare 2019, and this game is being developed by Infinity Ward. If I talk about story, so its story is about the drug cartels, and if I talk about its gameplay, so its gameplay combat will be realistic, as well as it will also have some nostalgic missions, as well as this game will also feature new modes like Warzone 2 Battle Royale mode, as well as DMZ mode, which is being inspired from Escape from Tarkov game. And if I talk about its release date, so Call of Duty Modern Warfare 2 2022 will be released on 28 October 2022 on PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, X and PC with cross-gen bundle and Vault Edition। रेजिडेंट एविल विलेज गोल्ड एडिशन एक स्पेशल एडिशन है जिसमें आपको मेन गेम के साथ साथ 3 एडिशनल पैक्स भी मिलने वाले हैं। और अगर इसमें पहले पैक की बात करूं तो पहले पैक में आपको शैडो ऑफ रोज नाम का डीएलसी मिलेगा, जिसमें आप ईथन की बेटी रोज विंटर्स के पर्सपेक्टिव से मेगामाइसीड के वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। दूसरे पैक में आपको मिलेगा मर्सनरीज एडिशनल ऑर्डर, जिसमें आप क्रिस रेडफील्ड, लेडी डिमिट्रिस्कू और कार्ल हाइजनबर्ग के पर्सपेक्टिव से खेल सकेंगे। और तीसरा पैक होगा थर्ड पर्सन ऑफ ईथन विंटर्स, जिसमें आप पूरा मेन कैंपेन ईथन विंटर्स के थर्ड पर्सन के साथ जो है एक्सपीरियंस करेंगे। और अगर मैं इस गेम की रिलीज डेट की बात करूं तो रेजिडेंट एविल विलेज गोल्ड एडिशन 28 अक्टूबर PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, X और PC पे रिलीज होगा। Castillo Protocol is an upcoming horror survival game, and this game is being developed by Striking Distance Studios and directed by the Striking Distance Studios director Glenn Schofield, who had co-created the Dead Space series. If I talk about its story, so Castillo Protocol contains the story about the prisoner Jacob Lee, who has been stuck in the Castillo prison, which is filled with darkest and horror environment, as well as creepy and terrifying creatures. If I talk about its release date, so Castillo Protocol will be released on 2nd December 2022 on PS4, PS5, Xbox Series S, X, Xbox One and PC with edition। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम्स में से एक है, और ये एक अपकमिंग एक्शन एडवेंचर गेम है, और इस गेम को सेंटा मोनिका स्टूडियोज डेवलप कर रहा है। और अगर मैं इस गेम के स्टोरी के बारे में बात करूं तो इस गेम की स्टोरी क्रेटोस और एट्रियस पर सेट है, और ये गेम रैग्नारॉक वाले टाइम पे सेट है, जहां पे हम फ्रेया और थॉर जैसे चैलेंजिंग एनिमीज से फाइट करने वाले हैं। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक 9 नवंबर 2022 को एक्सक्लूसिवली PS4 और PS5 पर जॉर्टनर एडिशन, कलेक्टर्स एडिशन, लॉन्च एडिशन और डिजिटल ड्यूलेक्स एडिशन के साथ रिलीज होगा। तो गाइस, आज की वीडियो में यहीं पर ही रैप अप करता हूँ। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।